केजरीवाल ईडी के सम्मन के जवाब में ईडी के सामने कौन सी तारीख को कितने समय पर पेश होने जा रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये प्रश्न सीधे तौर पर कर रही हूं कि व्हेन आर यू गोइंग टू प्रेजेंट योरसेल्फ बिफोर द ईडी। और सीटी स्कैन के बारे में मैंने बताया कि 3 सीटी स्कैन है दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के ऊपर। स्कूलों के अंदर टीचर्स नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, बेड्स यहाँ पर नहीं है, तो पूरी दिल्ली को वेंटिलेटर पर, व्यवस्था को वेंटिलेटर पर डालने का काम जो है वो केजरीवाल ने किया है। और जो लोग वायदा करके आए थे कि हम सबसे ज्यादा ईमानदार, कट्टर ईमानदारी का वायदा करने वाले लोगों ने आज कट्टर बेईमान लोग कौन होते हैं उसको परिभाषित कर दिया है। अनंत सूत्र, एक तरफ सिविलाइजेशन का, सभ्यता का, हम वो बातें करते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ड्रामा, भ्रष्टाचार, झूठ का जो अनंत सूत्र तैयार किया है वो लगातार दिल्ली की जनता और देश की जनता जो है उससे परिचित हो रही है। Friends, I'm here to bring to notice couple of things, that health infrastructure of any state is actually the backbone of a state because people's health is imperative. Considering all the efforts central government is making, Delhi government is falling short of its efforts, and they have put the entire governance model on the ventilator. Delhi's governance model is basically has been put on the ventilator. ED has summoned 5th time the Chief Minister of Delhi, and after his summons, avoiding summons for the 5th time, my straight question is, when a minister like Atishi Marlena comes and holds a press conference and does every other thing, ask questions of all kinds, but refuses to answer as to on which date, at what time, Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal, is going to present himself before the ED because he is avoiding the summons. There were close to 1,000 primary health centers in Delhi, which have been undermined and have been shut down, have been closed, and only a minuscule number, a few hundred, is left in the city. And only sub-health centers is what you get to see in the form of Mohalla clinic, and each porta cabin's cost has been rated above 40 lakhs, 40, 50 lakhs is what you pay for these matchbox kind of institutions, infrastructure. 45 to 50 plus lakhs is what has been spent. So there is another scam in the offing. While the ED's summon pertained to the issues of liquor scam, where they have tried to drown the entire city in alcohol and liquor. The Delhi excise policy is the biggest scam which one can think of. But while the Chief Minister is avoiding answering the ED summons on the Delhi liquor scam, another scam came to the front, and that scam happened to be the Delhi Jal Board scam. And post Jal Board scam, yesterday only, before the Delhi High Court, they have been found that a false affidavit has been filed in the court of law before the judges. The false affidavit contains some remarks regarding the procurement processes, where the audit report has found the central procurement processes is violative of law, and the drugs which are procured are substandard and are also not in terms of the regulations which need to be obeyed and adhered to. We've also seen the number of beds which Delhi required are less in numbers, and they had promised that they will bring beds up to the international standards. The 3 CT scans for 3 crore people is what Delhi hospitals have in place. We've also seen whether it's drugs, it's beds, it's ventilators, everything is not meeting the standards and is falling short
on all these performances. The worst one can think of is there can be no facility, and especially the medical facility, without the doctors. So there's shortage of doctors. There's shortage of teachers in schools. And there are quality professionals missing in the entire infrastructure. So in the name of health infrastructure, scam after scam is what one gets to see. So I can say that ये जो दिल्ली की सरकार है is only bothered about publicity, is only the hunger to get publicity is so huge that they are hungry for publicity. They are hungry to stay in power at any cost. They are hungry and greedy for corruption. But when it comes to doing their job, they are missing in action. So, Vigyapan par zor or Vyavastha kamzor is what one can think of. One can also think that Bhrashtachar or drama जो है वो पुरजोर और गंगोर ये सब गंगोर और पुरजोर ड्रामा और भ्रष्टाचार जो है उसका सिलसिला चारों तरफ मिलता है. One can always see that every time you ask questions related to law, adherence to law and order, adherence to regulation, one finds that everywhere they're missing in action, and only emphasis has been on the drama, on publicity, on the wrongdoings, and creating so much of ruckus and racketing in the form of scams is what Delhi has witnessed. Any questions, I will welcome. And I must add another line that they are responsible for putting the governance model of Delhi on the ventilator. And that's what Delhi is faced with. कोर्ट कचहरी का मामला है तो कोर्ट है, ईडी है, they are seized of the matter. They will do what they have to or they can. I am not a spokesperson for ED, so I cannot really answer on their behalf. Do you think what he's doing is wrong? Absolutely wrong. And I can quote ample number of examples. I'll quote the example of my Prime Minister. When he was the Chief Minister in Delhi, 7 hours he sat before SIT and answered each and every question. All the rubbish allegations which were brought against him, from trial court to the Supreme Court, he faced everything. That's the way you face up. You don't lie and you don't behave in this manner. That is called adherence to law and order, adherence to governance, and adherence to the constitution of this country. संविधान की सौगंध खाने वाले लोग हैं जी. संविधान और नियम और कानून का ही पालन नहीं करते. सिवाय ड्रामा और भ्रष्टाचार के किया क्या है? उसी पर पुरजोर इनका दारोमदार रहा है. No. This is a press on this subject. We need TB18. मैम अगर हम बात करें जिस तरह से उत्तराखंड में यूसीसी को लाया जा रहा है, मैम कैसे देखती है उसे, क्योंकि महिलाओं को अधिकार देने की बात जो है वो लगातार हो रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कल अपने भाषण में महिलाओं के अधिकार की बात की. ये मेरे आज की प्रेस से संबंधित नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरा परम विषय रहा है तो इसलिए मैं इसका स्वागत करती हूँ. और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत की कोई भी महिला जो है वो इसका स्वागत ही करेगी. साधारण सी बात है कि विभिन्न नियमों कानूनों में महिलाओं के अधिकारों का ही हनन हुआ. भाई आप क्रिमिनल लॉ देख लो, आप कमर्शियल लॉ देख लो, आप आर्बिट्रेशन देख लो, सब जगह पुरुषों से संबंधित जितने नियम कानून है वो एक है देश में. उसमें जाति संस्था इसका उसका कोई भेद नहीं है. सिर्फ जो नियम कानून महिलाओं पर, परिवारों पर लागू होते हैं वहीं पर भेद है. क्योंकि महिला को अधिकार क्या मिलना है, मेंटेनेंस मिलना है, नहीं मिलना है, उसका विवाह में क्या अधिकार होगा, तलाक पे क्या होगा, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है नहीं, सारे पंगे वहीं पे हैं. तो इसलिए जो भी नियम लिया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात देश में लागू होने की बात है, तो ये तो संवैधानिक एक ड्यूटी, मैं कहूंगी कर्तव्य था, जो संविधान बनाने वालों ने भी इस पर कई बार चर्चा की और उसको एक ड्यूटी के रूप में और आने वाले भविष्य के एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में छोड़ दिया गया था कि एक समय पर ये पूरा होगा. तो ये अपने पूर्वजों का वायदा पूरा करने का काम जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार और पार्टी के लोग और धामी जी ये सब लोग कर रहे हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ और हृदय से अपने पूर्वजों के बिहाफ पर भी कि वो सब इनको आशीर्वाद दे रहे होंगे कि जो कहा सो किया. बहुत